थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट इज देयर, इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर्स। It is useful for genetic counselor to advise intending couples about the possibility of having children with a genetic defect. With a genetic defect like hemophilia, color blindness, alkatonuria, phenylketonuria, sickle cell anemia, brachydactyly, polydactyly, etc. What the meaning of this? Just listen. What I told, it is very useful. It is very useful for genetic counselors. Why? Actually, if they having informations about the history of the disease, whenever you are moving towards to doctor, and they are always asking about the diabetes and something in your family, such types of disease there or not, your father or mother having such types of any problem. What they are asking, they just wants to check your pedigree. Ki this, whatever the problems you are facing in your family, already such problems are existing or not. If it is there, then some different treatments are there. They will find that this is the genetic cause. If it is not there, maybe due to some environmental conditions or some due to khan pan ke basis some problems it came. Getting that is pedigree. So it is very useful for the genetic counselor for finding, so that they can suggest to the couples ki in their coming for offspring such types of disease movements can be there. What the precaution they should take? They should, if whatever the childs are going to come, it is good for them or not. Because they can tell, they can just inform you about the chances. Ki suppose in hemophilia, in before also with X-linked recessive disorder, I told you by the making the cross, if mother is like that, father is like that, what the percentage of offspring in male and female it will move. We discuss about this. So they can inform to the parents ki if such types of inheritance you have, then the gene can move in your offspring in like this manner. In this manner, as I told, चाहे वो hemophilia हो, color blindness हो, तो hemophilia है X-linked recessive disorder, color blindness X-linked recessive disorder, alkatonuria autosomal recessive disorder, phenylketonuria autosomal recessive disorder, sickle cell anemia autosomal recessive disorder, brachydactyly and polydactyly autosomal dominant disorder. Getting? So somehow, if you will come to know कि okay ये ऐसे movements हो सकता है इसका, you can take some precautions. Clear? कि इसके हमें this baby it's going to form, it is safe for your health, for their health or not, any deformities will come or not, or how we can treat them, what the control measure we can take. So that is very important for the genetic counselor. Okay? Now next thing is there fourth point. फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस क्या कर रहा है? पेडिग्री एनालिसिस बेटा indicates that Mendel's principles are also applicable to human genetics. Mendel's principle कि how characters are moving, ये males से females हम लोग आते हैं criss cross and non criss cross movement. So with the help of pedigree analysis, ये जो Mendel's inheritance है उसको भी supports मिलता है with some modifications found out. With some modifications, देखो biology is the science of exception. With some modifications found out later, like sex-linked inheritance, like other linkage. Linkage at that time Mendel didn't discover. Because somehow this theory, this pedigree analysis, they are supporting to Mendel's principles also, कि how genes are moving. Up to some extent. Okay, some things are there, just like I told you कि polygenic inheritance वगैरह at that time during the Mendel's time they didn't work on that, so that's why we are unable to find them. Getting out the linkage you are unable to calculate with the help of this quantitative inheritance, you can't with the help of Mendelian principle, but by pedigree analysis so many things you will come to know. Clear or not? हाँ linkage नहीं दिखेगा आपको pedigree से. Clear? ठीक, तो इस चीज को समझेंगे. नेक्स्ट पॉइंट की बात हमारी क्या हुई बेटा? The pedigree analysis is helping to study the inheritance of genes in human. एक मुद्दे की बात. Pedigree analysis is helping in inheritance of gene in human beings. How these genes are moving, it is helping in it. Clear? हमें इसको ध्यान रखना है. It is also useful when studying any population where progeny data from several generations is limited. Okay, but clear? It is also useful when studying
any population, when studying any population, when progeny data from several generation, यहाँ मतलब सो इनके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी ऐसे 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 जीन चला आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आप उनको स्टडी कर सकते हैं. सेवरल जनरेशंस यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट. क्लियर और नॉट? आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो उसकी. इट इज आल्सो यूजफुल व्हेन स्टडीइंग स्पीसीज विद अ लॉन्ग जनरेशन टाइम. मैं एक कहना चाह रहा हूं, विद अ लॉन्ग जनरेशन टाइम. गेटिंग thing. So about the pedigree analysis, whatever the theory we discussed, ठीक, एक सेंसफुल की सीधी बात कर दो, only in one line. Pedigree analysis is giving you idea about the inheritance of gene, ठीक, from generation to generation. They are giving you idea about the movement of different types of genes, why they are disease or non-disease, different things. You will come to know okay, X-linked, Y-linked, autosomal recessive dominant, how these are moving, from father to mother or mother to daughter. How कि father से आ रहा है, mother से आ रहा है, how it is moving from father to daughter or daughter to grandson, whatever, you will come to know. Getting along? चलिए तो इसको हटाते हैं और अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी. इन पेडिग्री एनालिसिस सम थे, हम बात कर रहे हैं कुछ सिंबल्स की. सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस. सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस. व्हाटएवर द सिंबल्स वी आर यूजिंग whenever we are solving some numericals or whenever some questions are there, so whatever the symbols we are using, we are talking about that. Check in this chart. चार्ट में आप देखें जरा. चार्ट में सबसे पहले जो बात दे रही है that is the unaffected male. Unaffected male बेटा एक्चुअली आपने नॉर्मल डिब्बा बना दिया, ठीक है, तो दैट इज देयर unaffected male. आपने लेकर सीधे इस तरह से बना दिया. दिस इज मेल, unaffected male. ऑफ कोर्स और लाइक दैट आप गुल बना दें मून फेस. दिस इज unaffected female. unaffected female. लाइक दैट बेटा अगर ए आपका मेल है और ऐसे लाइन आपने देयर इज वन लाइन इज देयर ऑब्लिकली देयर डिजीज, देयर डिसीज्ड मेल. डिसीज नहीं, डिसीज निकल लिया तो परमात्मा में लीन, तो डिसीज्ड मेल, डिसीज्ड फीमेल, डिसीज्ड मेल, डिसीज्ड फीमेल मींस ऑलरेडी डेथ हो गई है, डिसीज नहीं है, ठीक है. वन टर्म इज देयर और लाइक दैट. अगर इसी को बेटा यू कैन अप्लाई लाइक दिस और इसको आप ब्लैक कर दें, कंप्लीट ब्लैक. इफ इट इज कंप्लीटली ब्लैक तो यू विल यूज द टर्म व्हाट? डिजीज्ड मेल. क्या टर्म यूज करेंगे आप? डिजीज मेल. लाइक दैट इफ फीमेल इज कंप्लीटली ब्लैक देन यू कैन यूज द टर्म डिजीज्ड फीमेल. द डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड फीमेल. गेटिंग नॉट? इफ फीमेल इज लाइक दिस, द टर्म इज लाइक दैट और इन between one point is there. This is carrier. This is carrier for X-linked condition. Generally this is not the compulsory thing. In the pedigree chart they can show you like so, they can show such types of points or it's not necessary that this point is there. Okay, sometimes you have to consider while they are not making such types of point. Okay, so this is आपका carrier condition. Okay, and the term and the sign is there like this. But see, this is not like this or this is not like that. This is unspecified sex. Unspecified sex means to say 47 नहीं, वो ताली बजाने वाला नहीं, कलानी फिल्टर नहीं. Unspecified sex means to say they didn't specify it's a male or female. Simply parents told कि one couple, they having 5 children. They having 5 children. ऐसा लिखा होगा. मतलब they having 5 children but we don't know how many male and female. That is unspecified sex. That are not. Next one term is written there as is from their one diagram. This is abortion. Abortion or stillbirth. Think abortion or stillbirth, sex unspecified. Right? It's a rounded still, but male, females, sex unspecified. This is abortion or stillbirth. Clear? One more sign is there. Male, बीच में गठजोड़, फीमेल. दिस इज मेटिंग. शादी हो गई दोनों की, ये एक गठजोड़ बन गया है. दिस इज मेटिंग. इट्स मेटिंग. एंड देयर इज देयर if like this two lines are here beta,
टू लाइन्स, एक ही जोड़ता भी यहाँ पे दो दो है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है. इफ टू लाइन्स आर हियर यू विल यूज द टर्म कंजेनियस मैरिज. कंजेनियस मैरिज, कंजेनियस मैरिज मीन्स टू से मैरिज बिटवीन, मैरिज इन रिलेशन. भाई बहन की शादी करवा दी, अपने चाचा चाची के यहाँ शादी करवा दी आपस में, इन द सेम ब्लड रिलेशन, इन द सेम ब्लड रिलेशन इफ इट इज देयर, दिस इज कॉल्ड consanguineous marriage. Such types of marriage can harmful because due to this beta आपका जो recessive disorder can come out. Recessive disorder, inbreeding depressions can be there. ठीक, but whatever, this is consanguineous marriage. Clear or not जी? One and the sign is there. They are showing one or two जो written में बेटा आपके कि parents with offsprings, parents with offspring one flow chart is there. क्या आपने parents बना दिए है ना, और parents भाई शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है. हेलो, तो पेरेंट्स विद ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स विद ऑफस्प्रिंग. जो बड़ा रोमन न्यूमरल्स से लिखा हुआ है, दिस इज फॉर जनरेशन, दिस फॉर जनरेशन. और जो 1 2 3 4 दे आर राइटिंग, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 दे आर राइटिंग इन अरेबिक न्यूमरल्स. ठीक, दे आर आपके इंडिविजुअल्स नंबर, इंडिविजुअल्स नंबर. डन और नॉट. अब ये बच्चे जो हो रहे हैं, दिस कैन बी, जैसे आप बात करते हैं कि आपके, अगर मैं ऐसे बना लूं बेटा, इफ बोथ आर ऑफ द सेम सेक्स, इफ बोथ आर ऑफ द सेम सेक्स, ठीक, लाइक दैट, मे बी लाइक दिस, व्हाइल दे आर फीमेल और मेल, लेकिन दोनों एक से होना चाहिए. अगर इन दोनों के पीछे वन जॉइंट इज देयर, वन जॉइंट इज देयर, दिस इज कॉल्ड बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस. This is monozygotic twins and this one is dizygotic twins. Dizygotic twins can be like that, और आप एक मेल और एक फीमेल कुछ भी, it can be like this also. But monozygotic twins will be both female और both male, और which sign होगा monozygotic twins and dizygotic twins, identical twins and non-identical twins. Done or not? Clear? One more sign is here. बेटा वन मोर साइन, व्हाट इज दैट? आप जैसे ये मेल है या फीमेल है, इस पर एक ऐसा एरो यू कैन ड्रॉ, वन एरो यू कैन मेक लाइक दिस. दिस एरो शोइंग वन फ्यू टर्म्स है इसी एरोस के लिए. वन टर्म इज दैट दिस इज कॉल्ड प्रोबैंड. व्हाट इज दैट? प्रोबैंड. प्रोबैंड इज देयर. प्रोबैंड, दिस इज द इंडिविजुअल फ्रॉम व्हिच केस स्टडी स्टार्टेड. इंडिविजुअल फ्रॉम व्हिच case study started, that is called proband. The individual from which case study started, that is proband. If it is a male, this is called propositus. If it is a male, this is called propositus, and if it is female, proposita. बात clear? If it is male, propositus, or female, then proposita. Done or not? तो propositus and proposita एक चीज में ध्यान रखनी है. क्लियर है ना जी? इसको याद रखेंगे, आगे मूव करेंगे. चलिए, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. ओके, मेरा वेट बेटा ये चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक, इसे रब करते हैं, उसे हटाते हैं. चलिए आइए.